हाय हेलो एंड वेलकम यू वाचिंग सी तारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ, और यहाँ पे हमारे साथ जो है, शी इज अ बिजनेस वुमन, शी इज एन आर्टिस्ट, एंड इनके जैसा कोई और नहीं है, अन्य, द वन द ओनली अनन्या। वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you so much. Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू राइम इट विद योर It's नेम, very cool. है ना? It's very cool. I've got the ठप्पा now, so ऐसा introduction किसी ने नहीं दिया बस मेरे बस को. she's lying, you know. No, it's written really. all over her face, but it's okay. हम चल जाएगा, हमारा चल जाएगा। No, really, it was very nice. Thank you. तेरी मेरी कहानी एंड क्या कर रहे, Hello, कैसे क्या किल करे? कर रहे हो, कैसे क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दीस सॉन्ग्स एंड कहाँ से शुरुआत हुई प्लीज? शुरुआत हुई जब मैं कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी, Yes. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हाँ में. जी. मैं बहुत जोर की पढ़ाई की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री हुई एंड आई ड्रॉप्ड आउट. ओके. शुरुआत बेसिकली वहाँ से हुई क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे याद है ट्यूसडे मॉर्निंग 7:30 AM मेरा एक ट्यूटोरियल होता था. तो फ्राइडे आई वुड लीव ऑक्सफोर्ड, गो टू लंदन एंड आई वुड बी गिगिंग एट पब्स, क्लब्स, बार्स, कैफेज, ओपन माइक नाइट्स, एंड देन आई वुड मेक श्योर कि मंडे रात को मैं निकलती हूँ सो आई कैन मेक इट फॉर माई ट्यूसडे मॉर्निंग ट्यूटोरियल बैक इन ऑक्सफोर्ड. So I think during that phase I realized that music is what truly gives me happiness. जो अंदर से मुझे वो satisfaction मिलती है जब मैं गाती हूँ, जब मैं music लिखती हूँ, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल रही थी. तो मुझे लगा कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और तो आई टुक द लीप. सो क्या कहें, मुझे ये बोलो, इफ यू वर टू रिव्यू द वीडियो एंड द सिंगर्स अनन्या एंड अंकुर, व्हाट वुड यू से? लाइक कैसा गाया है, क्या किया है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द सॉन्ग? जब मैं स्टूडियो में थी तो मैं अंकुर से बात कर रही थी और मैं ऐसे अंकुर, ये गाना मैं थोड़ा सा जोर से गाऊँ क्या? मतलब कि चाह बहुत कि चाहे तुम्हें, कि चाह मतलब कि विस्पर कर चाह, कैसा वाइब कैसा होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉन्ग. सो ही सेड एंड I think I agree with him. He told me कि no, you don't push your vocals. You sing like you're just having a conversation and let the lyrics just do the talking. Yeah. So how would I review the song? I would give the song 8 on 10. हमने 11 दिया है यार यहाँ Oh पे. wow, We're loving the song. thank you. Was singing the first thing that you wanted to do, और इसके अलावा कुछ और भी था अनन्या? Because मुझे पता लगा है पहले से ही आप संतूर भी प्ले करते हो, हाँ. आप बहुत सारी और चीजें भी करते हो, बट सिंगिंग लाइक What was it like about singing जो सोचा नहीं यार मेरे को यही करना है? उसके अलावा कुछ ऑप्शंस थे? जब मैं बच्ची थी, I think like maybe 7-8, I wanted to be an astronaut. Okay. तो वो obviously नहीं work हुआ because I have bad claustrophobia, तो I don't think I can go up in space. मतलब ट्रैफिक में ही I start getting panic. तो ऊपर लोग नहीं मिलेंगे, ऊपर तो खाली हो जाना. नहीं, It will be your world. पर claustrophobia बंद है ना. Yeah. तो वो नहीं होता, मेरे से नहीं होता. फिर I always had a dream to go to the army, but my parents, that's the only thing my parents said no for, because obviously it's वो था. And of course I've had aspirations in my business. I started my first venture when I was 17, Swatantra. Yes. फिर music था. I think while growing up music was my best friend. I was bullied quite badly at school. I felt very different because obviously my background was different, and I don't blame other children, but they looked at me differently. They didn't behave the same around me. ये सब के बीच में I was having my own inner struggles with my depression and anxiety at that time as well. I was not able to understand क्या हो रहा है. And ये सब के बीच में जो सुकून था मेरे लिए वो था music. So whether that was Eminem का rap, which a lot of which I would relate to, or Linkin Park, like with In the End or Numb. Or it was ABBA, Elton John, Kurt Cobain, Nirvana. You know, music was my, and Bollywood music as well. So it was always my safe space. I always felt like music understood me when no one else did. Then of course while growing up, then you find people, you know, then now I feel very lucky. Abhi now I have friends who really understand me. लेकिन growing up was, you know, for everyone, जैसे सबके लिए है, easy नहीं था. तो music was my best friend. And I think university में I found that little, you know, because I was independent. I was away from home in that way for the first time. So I think I really got to. I think just realization came upon me कि मुझे ये करना है और मैं करूँगी. Right. Was it a thing wherein जहाँ पे आप वो went out कर सकते थे with all your music? Because you talked about Eminem और ये सब की वो
it was a way to vent out all that जो हाँ, था, अंदर चल it रहा था? बिल्कुल vent और express, Yeah, I would say, yeah. to know कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो ये सब feel कर रही है. Someone else is also there in the world who's feeling these things. I'm quite an introverted person, so until I found my group of friends and got close to my family, I was quite alone a lot of the time. So that again, music was a big part of my growing up. So I think so this dream I had, but it was more like a secret dream. कि मुझे एक गाना तो रिलीज़ करना है, फिर था कि एक तो प्लैटिनम जाए, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी, तो मैं पोइट्री लिखती थी as my form of expression. But when I went to Oxford, I think, you know, we all live in bubbles ना, यहाँ पर बहुत we can come like a bubble. So I think when I left home for the first time, I saw the world and I said, oh, I got perspective. And I said कि वो एक click moment हुआ कि अच्छा, this is what I want to do. And right. I jumped into it. इस गाने में भी क्या करें में भी एंड में you know you wearing this sweatshirt या कुछ है, उसके पीछे there's a very strong message. Yes. वो आके चला जाता है, but that is pretty deep. Tell us something about that. I'm so glad that you noticed that, because equality is something that मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से मानती हूँ. So equality between men and women, equality of who someone may love, equality of where you're from, no abuse of power. Everyone should be allowed to be who they are, wear what they want to wear, go where they want to go, say what they want to say without hurting anyone else. So, you know, जैसे आपने notice किया, these are in my music videos. I try कि मैं थोड़ा सा message यहाँ वहाँ डाल दूँ. So this happened in the form of a T-shirt, sweat hoodie. जब मैं tour पर जाती हूँ, तो I always, you know, carry a flag of whatever I want to talk about. Sometimes it's that the rainbow pride flag. Right. Sometimes it's gender equality. Sometimes it's mental health, which is, you know, purple and green. So the mental health is something that, you know, I'm also very passionate about. I think for me personally, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि I put out my message in the world, and my medium happens to be through music, and now film. Mainly music, and my music you're doing videos. a fabulous job, you know, as you said कि music के साथ साथ एक वो message है जो सबको देना चाहते हो आप, बहुत बहुत कमाल की चीज़ कर रहे हो. एक message और आपने दिया है कि आप कुछ manifest करना चाहते हो, तो मतलब एक बार नहीं 4x करके उसको manifest करो. In this song, that is actually the wedding song of this year, yeah. Thank you. तेरी मेरी कहानी, क्या इतना कितना manifest कर रहे हो? Please tell us something about that song. तो तेरी मेरी कहानी was my first Hindi Punjabi Gana. Right. The producer was Rahul Sathu. He's a great friend as well. So I told Rahul Rahul, I don't want to disrespect the language. Right. So let me learn, do a few classes and learn the words. Yeah. Because I wanted to sound authentic when I'm singing it. Because there's a जब पंजाबी में गाते हैं ना तो थोड़ा सा swag है. वो easily नहीं आ सकता है. So I was like, maybe I can't do it. So I did a few lessons. I recorded it. I said, now I'll send it to a few people who I trust. Feedback मिला कि sounding fine. फिर ही गाना मैं रिलीज़ की. म्यूज़िक वीडियो में बहुत मज़ा आया क्योंकि 4 ब्राइडल लोग थे. मैं 4 बार शादी हुई मेरी 2 दिन में 4 बार. तो my hair and makeup artist and who's a great friend also, and my stylist did a great job from like the mehendi to every, oh my god, I can't explain. तो उसमें क्या था, दिशा from Dharma, she directed that video and the concept was hers. Basically all I told her was I want it around weddings, शादी, लेकिन मुझे इसको patriarchal नहीं चाहिए. I want this to be about the woman. How can we make the center of this video the protagonist? How can we make the story revolve around a woman and the woman's needs and what a woman wants? Now, many women have this dream of the perfect wedding or the perfect, you know, कि क्या घाघरा या अगर white wedding है तो gown. So we wanted to capture that. So it was a lot of fun. I really enjoyed that video. You kind of broke the internet because everybody was like शादी हो रही है, because that's what you did. You know, it was. तो can I tell you, मुझे 2 रात नींद नहीं आई. My marketing agency sent this idea कि ये photo post करो and it's happening, ऐसा कुछ सा caption. So I said, but people can think कि मेरी शादी हो रही है, and you know I don't want to deceive people. So they said that, that's the idea, to build hype. Yeah. Then I spoke to a few more people and they said, but you know, you're not directly saying it, you're not, you know, मतलब, पर honestly, बहुत hype create हुआ, I agree. Extra हो गया थोड़ा सा. Papa came and told me, please take it down because he was getting messages. लेकिन वो type का marketing ना,
it doesn't work for me, I realized, because मुझे 2 रात नींद नहीं आई. I felt so guilty, like I had fooled people. And वो intention नहीं था, ये तो मजाक में था. लेकिन मेरे से नहीं होता है. Teaser sort of thing, हाँ, तो but बहुत serious हो गया. It was everywhere. I got a letter written in blood from a fan कि how can you marry someone else. मतलब कि then when people found out for a music video, तो मतलब इतना relief सब जगह, सब मेरे platforms पर, Twitter पर, Instagram पर, तो मैं सोची थी कि जब मेरी सच में शादी होगी तो क्या होगा. खून की नदियां बह जाएगी यहाँ वहाँ हर जगह. तो वो ब्रो को मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब अभी सच में भी होगा कभी ना कभी, you know. हाँ, I didn't expect such a. I thought कि हाँ, I didn't realize कि लोग. I didn't take it so seriously. I don't take myself so seriously. I don't take the following so seriously. It means a lot to me, but I don't think I realized that it can become such a thing. Independent music, you know, the scene is back. Like वो वापस से अभी लोग इसकी बात कर रहे हैं. Initially था, कुछ साल पहले था, फिर बीच में it was only Bollywood, Hindi songs, फिल्मी गाने. अभी वापस से ये हो गया. So how do you see this thing, you know? I think it's great because I think अभी ना it's a very nice blend. Yeah. That there are people from Bollywood who are in music, featuring in music videos. There are independent artists who are also lending their voice to soundtracks. Yes. The OTT world has opened a lot up and has also created this great mixture. Yes. So I think it's a great time for everybody. Unfortunately, I know Bollywood has, you know, took a little bit of a hit in the middle, but hopefully Brahmastra, you know, and a couple of other movies, Bhool Bhulaiya and a few others, sort of are showing hope that it's going back up. I'm a huge fan of Bollywood. I did a film myself with Kunal Kohli and Bobby Sir. Yeah, I think it's a great time for independent music. With Spotify coming to India also and that opening up, it's a very exciting time for Indian music globally also. Yeah. क्योंकि जब मैं states में जाती हूँ, I think we would have, they find us very exotic. They love our accent, they love our culture, they love our colors. So actually, funnily, I think I fell in love with my culture through their eyes. Because growing up here, I just think I didn't understand the value. Right. So now every Diwali, I really enjoy myself. I really enjoy Holi. I love, you know, the small pujas that we do. Even though I may not be very religious, I believe in God and the universe. And so funnily through people in the Western world and living in LA for a year, then when I being in London so often, I've really fallen in love with India and our culture. So in the English music that I'm dropping next year, you'll see a lot of Indian influences in the production, in the sound, because that's what makes us us, and we have to be proud of that because our culture is beautiful. The amount of instruments we have, I mean, tabla se lekar ke santoor, sitar, I mean, kya hai, veena, I mean, it's beautiful. And Hindustani music, I mean, just the whole system of rags and things. So it's very beautiful. And kahin na kahin we've forgotten about all that, right? Yeah, we've forgotten about it. Bahar se, you know, they talk about it. Yeah. Coldplay ka video mujhe abhi bhi yaad hai, you know, it was full of colors, Exactly. everything, jis hisab se kiya tha. So yeah, I'm sure she's going to take it like to some other level. बहुत दूर तक जाने वाला है हमारा music and I hope so. Thank you. जो हमारा culture, of course, she's trying her best to do whatever she can do उसको promote करने के लिए. मुझे आप बोलो, what is that one movie जिसको लास्ट देख के आप बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए थे कि वाओ यार, ये मूवी बॉलीवुड की और ये कमाल कर गई है. Because I know there's this very deep side, you know, एक वो बड़ी deep सी side है, but I'm sure fun भी होगा, बहुत सारा fun होगा अनन्या में. There are 2 films, 2 फिल्म हैं जो मैं लूप पर देखती हूँ अगर आई हैव बैड एंजाइटी. चक दे इंडिया और नमस्ते लंदन. ये दोनों पता नहीं क्यों, ये द मूवीज काम मी डाउन. तो ये दोनों तो पता नहीं मैंने कितने बार देखे हैं. लास्ट नाइट आई सॉ ब्रह्मास्त्र ऑन हॉटस्टार. द VFX वाज ग्रेट. आई लव्ड द जो बेसिक जो मैसेज है बहुत अच्छी है. थोड़ी सी हैरी पॉटर जैसे, मतलब लव इज व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. So I really admired that. There's this friend of yours in तेरी मेरी कहानी, उसके साथ manifest कर रहे हो आप. Jins, yeah. And she's calling you Anan. Anan, ना? So Anan, please tell me कि अपने दोस्तों के साथ क्या और क्या chill करने के क्या तरीके हैं, थोड़ा सा हमको भी बताओ, because we would want to know कि ये इतनी जो balanced लड़की है, ये और क्या करती है. I love playing games. तो ताश, I love playing rummy, blackjack, sequence.
So we have like games night at home where all my friends come and we just play games. Right. Table tennis, rounders, hand cricket. मुझे बहुत मजा आता है ये सब चीज़ों में. तो मतलब अगर मेरे बिस्तर के पार गया तो 4 रन्स है, अगर डायरेक्टली गया तो 6 है. और अगर आउट होना है तो विकेट है. ऐसे एक बैग रख देते हैं पीछे. देखो ये वही कर सकती है जिनके बेडरूम में जगह हो, ठीक है. वो वाइट लिनन वाला, वो सॉरी वाइट बेडशीट, वाइट तकिए वाला. नहीं मेरे रूम में इतने जगह नहीं है. इट्स क्वाइट एक्चुअली, क्योंकि वो पैसेज एरिया छोटा सा ही है, वही खेलते हैं हम. I love to drive with good music, so we do that. Sometimes I'm driving and my friend is sitting on the seat next to me, Right. and I'm like I can't drive anymore. So then we switch. Right. So घर से सीलिंग जाते हैं, फिर माउंट मैरी जाके दर्शन करते हैं, फिर we switch, and then she drives back. Right. And then we go to Gateway of India, take a round there and come back. Then by that time it's 11. I'm like, oh God, I have to go into studio. I haven't finished this song. Right. Then I go to studio after that. Then I'm in studio till 3 a.m. Then I'm like, oh God, I've got a board meeting at 10 in the morning. तो सब बैलेंस हो ही जाता है. मुझे ये बोलो, आज के टाइम पे सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑफ कोर्स. सो हाउ एक्टिव आर यू एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक कहीं ना कहीं हाउ इज इट अफेक्टिंग द सोसाइटी? किस तरह से क्या चल रहा है, बोलो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? So social media is, I mean, it's curated reality. I call it curated reality. तो सच है, लेकिन it's not necessary for us to share everything about our lives. Otherwise, what will we keep to ourselves? Yeah. I enjoy it. I don't take it too seriously. I'm trying to get better at it. But I mean, reels अभी करने हैं तो that I do. The point is, जो भी करो मजा आना चाहिए. Otherwise, there's no point. Right. In most things, there are certain things we have to do that we don't enjoy. Yeah. In whatever content also I make, it's stuff that I enjoy. Yeah. So if an audio is trending, for example, I may do it, but I'll do it in a way that I enjoy it. I'll make it my own. But I don't put any pressure on myself कि इतने followers है, इतने होने चाहिए, क्योंकि there's no end to that. And you know, I've been stuck in that cycle before. और वो बहुत ही डिप्रेसिंग हो सकता है कि मेरे गाने और लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरे नंबर्स ये क्यों है, वो क्यों नहीं है. मतलब पर द पॉइंट इज इट्स अ जर्नी. फिर वो मजा चला जाता है, वो फिर वो इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक वर्क. And then there's no fun. Then you'd rather just do a 9 to 5, you know, मजा नहीं आता है. क्लास की तरह, like काम की तरह कि ऐसा करना ही है, इतनी रील्स एक दिन में डालनी है. That's what we were discussing some time back. Okay, यहाँ पे एक काम है जो कि आपको करने में hopefully मजा आएगा. ठीक है ना? तो मस्ती राउंड है. Okay. मैं आपको कुछ situations देने वाला हूँ. Okay. So I'll just read out these situations to you. All you need to do is जल्दी कौन सा गाना दिमाग में आ रहा है. Oh, I'm very bad with this. जल्दी I'm very bad. You take your time. I'm not going to make it work for you. Okay, thanks. Just chill, relax. Okay, cool. Take your time. Okay. तो सबसे पहले सामने एक बहुत अट्रैक्टिव इंसान दिख गया तो कौन सा गाना आएगा जहन में? एक लड़का को देखा तो ऐसा लगा. लवली चेंज ही कर दिया, बट ठीक है. लवली इट इज. ओके, ये एक गाना जिसको सुन के लगता है यार लॉन्ग ड्राइव पे तो जाना ही जाना है, या जो आप सुनते हो. लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी छुट्टा दे दो इत्थे कल्ले जाने ओ. किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो कौन सा? मैं परेशान. ओके, किसी को मनाना हो तो somebody is थोड़ा रूठा हुआ आपसे. एक गरम चाय की प्याली हो. चलो, घर पे अकेले फंसे हुए हो, बोर हो रहे हो, फिर तो कोई भी गाना चलेगा. और पूरा मालूम ओन सॉन्ग्स. क्या करे. बस एक गाना जिस पर रात भर पार्टी कर सकते हो आप. लत लग गई जमाना कहे ना, whatever the lyrics are. ओके, लेटेस्ट फेवरेट गाना लाइक अभी का. ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः ओम. I love that song. पुराना कोई फेवरेट गाना? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब There was a आएगी reason तू. why I asked you this question और ये मैंने प्लग किया गाना. तो वो मैनिफेस्ट करते करते लाइक सपनों का राजकुमार. Is there somebody? Please tell us something about that. No. So कोई भी नहीं है. so आने वाले समय में लाइक कुछ probability, like possibility? Honestly ना, क्या करे is exactly how my emotional state a while ago. I just feel like love can really mess you up if it goes wrong, because it's such a strong emotion and that's why it's so beautiful. So right now I'm just focusing on myself, on my work, on healing myself. My love, I can't handle all this right now.
मतलब मेरे से नहीं हो रहा है। ये बार बार चलाओ, जो लास्ट में लव अप यार, माय आई कांट हैंडल ऑल दिस, तो ये बार बार चलाना होगा यहाँ पे प्रोमो में। ओके, जाते जाते अंग्रेजी की पाठशाला लगने वाली है अब आपकी। सो वी हैव दीज सॉन्ग्स जो कि ट्रांसलेट किए गए हैं अंग्रेजी में, लाइक दीज आर लाइक द लिटरल ट्रांसलेशंस। ओके, Oh God. थोड़ा दिमाग चकरा सकते हैं। सो द फर्स्ट वन फॉर यू इज जस्ट लाइक वन नीड्स टू ब्रीथ फॉर लाइफ, just like one needs to breathe for life, all I need is one darling to love. सांस की जरूरत, सांसों की जरूरत। you have to sing it for us. सांसों की जरूरत है जैसे। बहुत पुराना गाना है ये। हाँ, मतलब अरे इतना भी नहीं। हाँ, it's quite पुराना। it is. Okay, but it is quite famous, yeah. It is quite okay. चलो, हाँ, it's very famous I'm पर sure नहीं you know आया। this one. Okay, you 120% you know this one. You I don't saw putting this pressure on girl- me. No. हाँ। I saw this girl and felt like this. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे किरणों की, खिलता गुलाब। हाँ, जैसे खिलता गुलाब, जैसे किरणों की शायर का ख्वाब, जैसे उजली की किरण। अंग। Finally हमने भजन बना दिया इस गाने को। नो वरीज, कोई बात नहीं, वी अपोलोजाइज सर, जिनका भी ये गाना है। हार्ट इज फुल। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार। यही था आंसर, यही था आंसर। यही था। ओके, माय हार्ट इज बिगिनिंग टू पाउंड, इट इज स्टार्टिंग टू धक धक करने लगा हमारा जिया। She's too good with this यार, मुझे नहीं लग रहा था ये वाला आएगा। Okay, one last, चलो, if you let's No, don't put pressure on me. It's okay, one last one. Go fly fly black crow, I put some jaggery in your mouth. मुझे पता ये काला कौवा। Go fly fly black crow, I put some jaggery in your mouth. I'm like, I know it यार, मुझे पता है ये यार। okay, go fly fly black crow. कौवा, कौवा। I put some jaggery in your mouth. काले कौवे से मत डरो। नहीं, क्या है गाना? She's like, what is this? मतलब उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, you know. The protagonist is trying to tell this crow that, bro, just fly away. I'm going to put some jaggery in your mouth. Okay, that's enough. That's enough, I think. You know, all I want to say is it was lovely having you on this It was show. great. We had so much fun. We had a lot of I'm fun. sure आगे भी आप ऐसे ही गाने निकालते रहोगे और हम यहाँ पे और ऐसे ही बहुत सारी मस्ती बहुत करते मस्ती रहेंगे, करेंगे। है ना? जाते जाते it's time for a मस्ती selfie with Ananya Birla.